Anglophile is holding 7 days public speaking workshop. When there is no enemy within, the enemy outside can do you no harm. Surprisingly, it's not death that most people are afraid of. Hey, what's up? This is Eminem Dot, motivational speaker, presenter, trainer, communication coach, entrepreneur, chief executive, and founder of Anglophile English Learning Center. Leaders are always readers. I love reading books. Whenever I get leisure time, I pick up some of the books right from the shelf and start studying them. They add values in my personality. They revolutionize my knowledge and wisdom. I got good collection of books right now. You can see wonderful book I have there at the top. They're in my hand. It's about body language at work. Read The Signs and Make the Right Moves by Peter Clayton. Wonderful book. It has fascinated me quite a lot, right? It's truly very important to understand what body language is all about. Body language, don't forget, is more or less like a soul in your confabulations and presentations. Body language is a very powerful tool. We had body language before we had a speech, and apparently 80% of what you understand in a conversation is read through the body, not the words. Body language, according to the Oxford Dictionary, the conscious and the unconscious movements and postures by which your feelings, ideas, and attitudes are communicated. What is body language? I've asked countless people this question. Invariably, the answer what they give is something along the lines of nonverbal communication, which I suppose is all right as far as it goes. However, it does not really illuminate the true nature of the body language. Do you know the normal conversation speed? The normal conversation speed is around 100 or 120 words per minute. In the same amount of time, the average person can think about 800 words. It means your body language is the outlet for this huge mass of unspoken thoughts and feelings. Study yourself for 24 hours watching what happens to your body and voice when you feel happy, disappointed, angry, confused, and so on. Notice the way you move your hands and arms, head and face, all that get excited. When you're hearing something you enjoy, conversely notice how your body slows down when you are bored. Your communication can be divided into two major types, verbal and nonverbal. I put forward this question to the students sitting at Anglophile English Learning Center, learning English as a second language, to the professionals, doctors, engineers, coming from different backgrounds, communities, different school of thoughts. I asked them how much of communication is really verbal. They come up with an idea. It's like 70%, 80%, 90%. This is contrary to the belief that we have about verbal communication. It's only 7%. Surprisingly, it's only 7%. 7% of your ideas are communicated through your words, through your verbal communication. Your nonverbal communication has two different components, like your vocal and your body language. Your vocal includes your vocal cords, your pitch, your voice, your rising intonation, falling intonation, full gears like road gear, highway gear, motorway gear, runway gear. All of these gears would come in handy the moment you were talking, making general conversations, or presenting or introducing your guests, or doing the MOC in the extravaganzas or conferences or events. Yes, you can make your vocal stronger early in the morning after you offer prayer. Do some reading practice. Pick up the books that you have available and start reading them loudly, and check out the voice, how your voice goes up and it comes down. Adjust it according to the situation. And now let me tell you something about your body language. Your body language includes your facial expression, your shoulder, your eye contact, your choreography, your movement. All that should be well balanced and synchronized in order to grab the attention of the audience, to keep them hooked on the edges of their seats. So remember, your verbal is only 7%, 38%
is your vocal and 55% is your body language. If you're good at body language, you can truly inspire the audience. You can enthrall them. You can give a matchless performance in front of millions of crowds. I can tell you one thing, you can set the world on fire. Talking is like playing a golf, driving a car, owning a store. More you do it, better you get at it, and the more fun you have doing it. But you have to understand these fundamentals first. Thank you very much. Take a good care of yourself. Bye-bye. नाज़रीन, मैं उर्दू में भी कुछ वजाहत कर दूं। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो दो हिस्सों में तकसीम है, एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल। वर्बल जो आप बोलते हैं, नॉन वर्बल जो आप बोलते नहीं हैं, जो आप अपने जेस्चर से, पोस्चर से या अपने वोकल से इजहार करते हैं। तो वर्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7% है। हम तमाम लोग वर्बल को ज़्यादा फोकस करते हैं, नॉन वर्बल को इग्नोर करते हैं। इसी वजह से हम अच्छा प्रेजेंटर नहीं बन पाते, हम एक अच्छा स्पीकर बन नहीं पाते। तो सिर्फ 7% जो है ना वो आपका वर्बल है, जिससे आप अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका नॉन वर्बल है, जो दो हिस्सों में तकसीम है। वो क्या? वोकल और बॉडी लैंग्वेज। वोकल आपका 38% है और बॉडी लैंग्वेज आपका 55% है। इस तरह 100%, 7% आपका वर्बल, 38% आपका वोकल और 55% आपका बॉडी लैंग्वेज। सो वोकल पर भी आप काम करें, आपके 4 गियर्स हैं, उस पर काम करें। और बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है, नमाज पढ़ें, फजर के वक्त तिलावत करें और फिर कुछ रीडिंग प्रैक्टिस कर लें। और आप चेक करें अपने वॉइस को, पिच को, राइजिंग इंटोनेशन, वॉइस का ऊपर जाना, नीचे आना, ये किस तरफ जा रहा है आपका वॉइस, इसको आप चेकआउट रखें। आप बात करने के वक्त, आप जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं या एमओसीज करते हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी, किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका वोकल बहुत हाई होता है, पिच हाई होता है। जनरल कॉन्वर्सेशन में वोकल बहुत नीचे होता है, पिच नीचे होता है। तो राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन का ख्याल रखें, एडजस्ट करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और फिर आपका बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें आपका आई कॉन्टैक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका शोल्डर हो गया, आपके जो कोरियोग्राफी है, मूवमेंट है, जो आप स्टेज पर हैं तो किस तरह आपको किस हद तक चलना है, ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज है। और बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का तरीका है, आप अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करें गैजेट्स और गियर्स में और मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन में। अगर आपके प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप स्मार्ट है, और अगर स्मार्टफोन है और अगर प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं है, आपकी टॉकिंग, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, तो सब बेकार है। तो आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें। कम्युनिकेशन इज़ अ सीरियस बिजनेस। कम्युनिकेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ, नो मैटर योर एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ। तो ये मुझे उर्दू में वजाहत करना था। नाज़रीन, यकीनी तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मज़ीद इसके बारे में बात करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।